So today we are going to see mathematics for classes 5th to 10th. Actually this point is important above the 10th standard also. So this point, name of this point is order of operation. Order of operation means what? Sometimes what happens, in one example we see the more signs, means addition and subtraction sign, we see the more signs. So how at that situation which order you have to follow, that means what is the order of operation, what to do in that example. So that point we are going to cover today, and that point name is order of operation. So before we start the point, there is some 4 rules. So firstly, before we understand the point, we have to understand the rules, and one important note is there. So firstly we will understand the rules and then we will see the note. So rule number 1 is that plus plus plus. We have to keep in mind like that way. Plus plus plus, plus minus minus, minus plus minus, and minus minus plus. So this is a very important rule. These 4 rules are very important. And one thing that we have to keep it in mind, that note that greater number sign goes to the answer. Once we clear the example of all the rules, then we will understand what is the meaning of these rules, how to learn this rule. So we will start explaining first rule. So our first rule I have already written here. The first rule is plus plus plus. Now when we see the example of this rule, this is a 3 plus 4. Now plus means what? Positive number. When we can say that number is positive, now this number, suppose 3 is a positive. Now this 3 number is a positive and this 3 is a negative number. But this 3 we can also write like this way. That means what? This is also a positive number and this is also a positive number. We can write positive number in both ways, and both the ways are correct. But negative number, when we are going to write a negative number, that negative sign we have to put before the number. That means what? When we see the number line in 4th standard or in 3rd standard, we have seen the number line. At the center we have 0, and this side all positive numbers. 1, 2, 3, 4. On the right side of the number line of 0, we are a positive number, and left side we see the negative numbers. Now see, in the negative numbers, these all numbers are the negative numbers. That's why we put negative sign before the sign. But here on the right side, these numbers are the positive number, but we haven't put any positive sign. So that means what? If we put the positive sign, or if we haven't put the positive sign but that number is a positive number, so that means what? This is a plus 3, or this is a positive 3, or this is also plus 3. इसका मतलब क्या है? प्लस के नंबर के सामने अगर नंबर प्लस सपोज 9 लिखना है, आपने प्लस 9 ऐसे लिखा या फिर प्लस 9 लिखा, इन दोनों का मतलब ये पॉजिटिव नंबर ही है, इन दोनों का मतलब एक ही. बट व्हेन वी आर राइटिंग a negative number, we have to put a negative sign before the number. So let's start. Now we will start the first rule and the example. Now our first rule is that plus plus plus. That means what? The sign of this 3 is plus and sign of this 4 is plus. Now we have to check the order. Now firstly we have to go for the order. Now the rule is that plus plus plus. That means what? Order is plus. यहाँ पे दो नंबर से, दोनों का साइन प्लस है, मतलब ऑर्डर प्लस है, हमें एडिशन करना है. That means what? 3 plus 4 7. After calculating the answer, we have to go for the note. Note is that greater number sign goes to answer. So greater number sign. Now for 3 and 4 is greater number and 4 sign is 7. That's why 7 sign is plus. इस 4 का साइन प्लस है, 4 is a greater number. That's why 4 का जो साइन होगा, that there I wrote in the note, greater number sign goes to answer. Greater number 4 है, उसका साइन प्लस है. That's why आंसर को ये साइन जाएगा प्लस. अभी ये साइन लिखा आपने, अगर प्लस 7 ऐसे लिखा या फिर आपने सिर्फ 7 ऐसे लिखा, दोनों का मतलब एक ही है. नेक्स्ट एग्जांपल, plus 9 plus 8. Now here is also the same. Both the numbers are plus. ये प्लस साइन आपने दिया या फिर नहीं दिया, उसका कुछ मीनिंग नहीं है, वो पॉजिटिव नंबर है ही ऑलरेडी. So plus plus order is plus. Plus plus order is plus. So plus 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 9 plus 8 17 and sign of a greater number. Now here 9 is greater and 9 sign is plus, so answer sign is also plus. So this is the first rule. I hope you all understood. Now we will look at for the next rule. The rule number 2 is a plus minus minus. If
one number have plus sign, another number have negative sign, then we have to follow the negative order. That means what? We have to subtract the number, smaller number from the bigger number. Let's take an example of this rule. 9 minus 8. 9 minus 8. Now the sign of this 9 is plus, sign of this 8 is minus. So here is the plus. When we see this, here is the sign plus and here we have the sign minus. Now we will see the order in the rule. Plus, minus, minus. So we will do the subtraction. 9 is a greater number, 8 is a smaller number. So 9 minus 8, 1. Now we have to go for the sign. Note. So greater number sign goes to the answer. So greater number is 9 and 9 sign is plus. So its answer is plus 1. Another example. Let's take another example. 13 minus 15. 13 minus 15. Now or you can also write down plus 13. 13 लिखो या plus 13 लिखो, दोनों का मतलब एक ही है. So plus 13 और minus 15. Now ये प्लस है यहाँ पे साइन, यहाँ पे निगेटिव साइन है, माइनस साइन. सो प्लस माइनस ऑर्डर इज माइनस. सो प्लस माइनस. सो पहले हमें माइनस का ऑपरेशन करना है. तो ग्रेटर नंबर 15 में से 13 गए तो बचते हैं 2 एंड अभी देखना है साइन. तो इसको साइन 15 इज अ ग्रेटर नंबर एंड 15 साइन इज नेगेटिव. सो यहाँ पे आएगा -2. अगेन 30 minus 20. 30 minus 20. The sign of 30 is plus, sign of 20 is minus. Plus minus order is minus. So 30 minus 20, 10. And sign. In this situation, in this third example, 30 is a greater number and 30 sign is plus. So answer को 30 का sign आएगा. So plus 10. Plus 10 लिखो या फिर सिर्फ 10 लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है. Okay, so this is the second rule. Keep this rule in mind. Plus minus. First rule is plus. Here plus minus order is minus. Now we will look for the third rule. That third rule is that minus plus minus. That means what? If first number is negative, second number is what? Positive. Then we have to follow the order negative. That means what? Minus order, subtraction order. For example. Minus 11 plus 2. Minus 11 plus 2. Now first number is negative, second number is positive. Now we will see. First minus plus order is minus. So minus plus minus we will do the subtraction. Smaller number subtract from greater number. 11 minus 2, 9 and sign of a greater number. So that's a minus 9. So this is a answer of this question. Minus 11 plus 2, answer is minus 9. Another example, minus 3 plus 1. Minus 3 plus 1. Now in this situation, here is a sign minus, here is a plus. So we will see minus plus order is minus. So minus plus minus. 3 minus 1, 2 and sign of a greater number. Here is a greater 3. तो 3 का sign negative है, तो यहाँ पे भी negative sign है. Another situation, minus 15 plus 20. Minus 15 plus 20. Now see, 15 sign is minus, 20 sign is plus. So minus plus order is minus. So 20 minus 15, 5. Now sign of a greater number. यहाँ पर greater 20 है तो 20 का sign plus है तो इसको डायरेक्टली plus sign आएगा. तो ये लिखा या फिर नहीं लिखा, ये 5 पॉजिटिव है आपने. Then next is a minus 27 plus 27. Now in this example we will see minus plus order is minus. So minus plus minus. Now 27 and 27 both are the same number. So we will subtract because order is subtraction. 27 minus 27 answer is 0. Now what sign we have to give to the 0 because this is 27 and this is also 27. In the note I wrote greater number sign is goes to the answer. यहाँ पे दोनों भी नंबर सेम है तो in this situation दोनों नंबर सेम है, दोनों का साइन अलग अलग है लेकिन आंसर जो 0 आता है 0 को कौन सा भी साइन नहीं होता. जस्ट यू राइट डाउन द 0. So that is the answer. Minus 27 plus 27. Minus plus minus 27 minus 27 0 and sign of a greater number. Both are the same numbers. So no need to put a sign. So that is the answer 0. Okay, so this is the third rule. Now we will go for the fourth rule. Fourth rule is that minus plus.
minus minus plus. That means what? If first number is negative and second number is also negative, then what we have to do? We have to do order. We have to do the operation addition. Addition का operation करना है. देखो for example minus 9 minus 7. Minus 9 minus 7. Now see, sign is minus minus, both are the negative number. Then order is addition. Minus minus plus, order is plus. That means what? Minus minus plus. So we will add the number 9 plus 7 16. And now after the addition or after the operation, we will go for the note greater number sign. So here is 9 is greater than 7. So 9 sign is minus. So minus sign goes to the answer. Okay, another example, minus 35 minus 20. Minus 35 minus 20. Again the same. Minus minus, order is plus. So we will do the addition. Minus minus plus. 35 plus 20, 55. After the operation, go for the note. Note is that greater number sign goes to answer. Greater number is 35. 35 sign is minus. So here will come minus. Another example, minus 1 minus 0. Now here minus minus plus, so minus minus plus 1 plus 0 1, and sign of a greater number is 1, so 1 sign goes to the answer, and that is a minus over. Or simple you can keep it in mind. If example is like that, minus 0 minus 99. अगर 0 के साथ कौन सा भी ऑपरेशन है, 0 के साथ किसी भी नंबर का कौन सा भी ऑपरेशन है, तो आंसर वही नंबर आता है. दैट मींस व्हाट? यहाँ पे नेगेटिव नंबर था तो आंसर डायरेक्टली नेगेटिव नंबर आएगा. This is a trick to solve the example. If there is a ऑपरेशन में अगर 0 है तो डायरेक्टली वही नंबर लिखो. सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 0 plus 9. No need to solve, just write down the plus 9. That is the answer. Okay, so this is the order of operation. Now what we have to do, or what the students have to do, they have to keep these 4 rules in mind. How to keep it in mind? Plus plus plus, plus minus minus, minus plus minus, minus minus plus, and keep the note also in mind that greater number sign goes to the answer. Most of the time what happen, students solve the example correctly but they miss to write the sign of answer and they lose their marks. बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑपरेशन तो करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है तो वो करते हैं 9 plus 7 16, लेकिन ये साइन भूल जाते हैं, and because of that they lose their marks in this situation. So what you have to keep this 4 rule in mind, and also the note. Okay, now we will see the mixed example of all the 4 rules. Order of operation के जो 4 rules हमने देखे, plus plus plus, plus minus minus, minus plus minus and minus minus plus. तो इनके अब हम mixed example देखेंगे, मतलब 2-3 ऑपरेशन एक में होता है तो कैसे सॉल्व करेंगे. Now the first example is 9 minus 11 plus 8. 9 minus 11 plus 8. Now we will solve this example. How to write this example? First you see there. Write on the example as it is. 9 minus 11 plus 8 is equal to. Now what we have to do in this situation? Here we have to solve 2 operation. That means what? Firstly we will do the operation of these 2 numbers. Then what result will come? That result and this 8 we will combine and do the next operation. So we will first do this one. 9 minus 11 plus 8. Now we will solve this operation first. Now यहाँ पे देखो 9 का साइन प्लस है, प्लस माइनस, so प्लस माइनस रूल नंबर 2, प्लस माइनस ऑर्डर इज माइनस. यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ पे माइनस है, सेकंड रूल है, सो प्लस माइनस माइनस, सो 11 में से 2 गया, 11 minus 2 we will get answer 2. Now which is the greater number? In a note we have seen greater number is 11, so 11 sign goes to answer. That means what? minus 2 is the answer. 9 minus 11 किया तो ये सिर्फ सॉल्व किया हमने, इसका आंसर आया -2. We have solved this much only in this step. 9 minus 11, answer is -2, and this plus 8 as it is. ये plus 8 हमने as it is यहाँ पे लिखा. Now हमें फिर ये सॉल्व करना है. अभी यहाँ पे माइनस प्लस रूल नंबर 3, माइनस प्लस अगेन माइनस, ऑर्डर इज माइनस, ऑर्डर माइनस से मतलब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है. माइनस प्लस माइनस, so 8 minus 2 6, and sign of a greater number,
सो ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, 8 इज अ ग्रेटर, यू ऑल नो, सो 8 साइन इज प्लस, सो यहाँ पे आएगा +6 या फिर 6। तो इसका मतलब आया, इसका आंसर डायरेक्टली फाइनल आंसर हमें मिलता है 9 minus 11 plus 8 and its answer is +6. Now in the next example, I will write example again. -17 plus 18 minus 9. -17 plus 18 minus 9. Now here also the same. पहले हमें, आपको अगर लगता है लास्ट के दो नंबर का ऑपरेशन करना है, you can do last. अभी यहाँ पे मैं पहले इसके बजाय करने के बजाय इन दोनों का करता हूं ऑपरेशन. बट वन थिंग यू कीप इट इन माइंड दैट व्हेन यू आर डूइंग द नंबर और व्हेन यू आर डूइंग द ऑपरेशन, यू जस्ट उस नंबर के सामने जो भी साइन है, उस नंबर के सामने जो भी साइन है उसको कंसीडर में लेना है. मतलब ऐसा नहीं सिर्फ ये 18 नहीं लेना है, आपको +18 बोलना है. सो ये यहाँ पे मैंने पहले दो नंबर का किया था, अभी लास्ट के दो नंबर का ऑपरेशन करता हूँ, आंसर सेम ही आता है या फिर बराबर ही आता है. सो -17 आई विल राइट एज इट इज, -17 will come as it is. Now यहाँ पे plus minus, so rule number 2 plus minus, minus 18 minus 9, 18 minus 9 answer is 9 and sign of a greater number, यहाँ पे 18 greater है तो 18 का साइन आएगा प्लस. ओके, सो +9 इन दोनों का आंसर आया +9. अभी ये सॉल्व करना है. माइनस प्लस, रूल नंबर 3, माइनस प्लस माइनस 17 माइनस 9, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 17 में से 9 गए, 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 आंसर इज 8 and sign of a greater number, so that is a -8. 17 minus 9 8 sign of a greater number, so इसका आंसर आया -8. सो क्वेश्चन था -17 plus 18 minus 9, तो इसका आंसर जो है वो आंसर आता है -8. Now in the third example you see -19 plus 18 plus 19 is equal to -19 plus 18 plus 19. Now see, सपोज आपको किसी को लगता है कि मुझे चलो ये दो नंबर का ऑपरेशन पहले करना है, फर्स्ट और लास्ट नंबर का. यहाँ पे हमने फर्स्ट दो नंबर का किया, यहाँ पे लास्ट दो नंबर का किया. किसी को लगता है चलो मुझे फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का कुछ ऑपरेशन करना है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो. देखो इसका मतलब यहाँ पे -19 है, यहाँ पे +19 है और ये +8 हमें एज इट इज नीचे लेना है. तो मैं सपोज एज इट इज उसको नीचे लेता हूँ. यहाँ पे उन दोनों का ऑपरेशन करना है. -8 19 plus 19, -19 plus 19, minus plus minus plus minus and 19 minus 19 0 and sign of a greater number, but as I told both the numbers are same and 0 have no sign, so no need to put a sign. And 0 plus 18 plus है यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब plus 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 0 plus 18 आंसर आएगा 18. Now third example, fourth example, this is the answer of third example. Fourth number example, -3 plus 8 minus 7 minus 8 minus 11. Now see in this example, -3 plus 8 minus 7 minus 8 minus 11. Now here हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों का ऑपरेशन करेंगे. See, minus plus, rule number 3, minus plus minus 8 minus 3 5, sign of greater number, so +5 and remaining term as it is -7 minus 8 minus 8. Now इन दोनों का ऑपरेशन करते हैं. प्लस माइनस, रूल नंबर 2, प्लस माइनस माइनस 7 minus 5 2, sign of a greater number, so -2, remaining term as it is -8 minus 11. Now इन दोनों का ऑपरेशन करते हैं. फिर यहाँ पे -8 और -11 as it is, माइनस माइनस, रूल नंबर 4, माइनस माइनस प्लस 8 plus 2 10 and sign of a greater number, यहाँ पे greater 8 है तो उसका साइन आएगा माइनस and ये -11 as it is. Now again यहाँ पे रूल नंबर 4 ही आएगा because माइनस माइनस है, माइनस माइनस ऑर्डर इज प्लस, so do the addition 10 plus 11 21 and sign of a greater number, so greater यहाँ पे 11 है, so -21. This is the answer. आपको इस अलग मेथड से भी आप उल्टा भी कर सकते हो सॉल्व, या फिर सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, आपको ये रूल याद रखना है, ये नोट याद रखना है. और जो भी आप नंबर ले रहे हो, सपोज यू आर कंसीडरिंग दिस नंबर 8, so this is not only the 8, this is the -8, this is -8 or -8. If you are considering this 8, this is a +8. ओके, आप ओरली इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो. -8 plus 8 माइनस प्लस माइनस 8 minus 8 0, तो ये डायरेक्टली निकल जाएंगे ये दो नंबर. तो देखो
माइनस 3 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 7 10, इसका आंसर आएगा माइनस 10, और ये माइनस 10 माइनस 11 माइनस माइनस प्लस 11 plus 10 21, and sign of a greater number, so minus 21. So this is the answer. Okay, thank you.